Good morning students. In previous chapter we discussed about different nutrients present in food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water. Now let's move on to our next topic, and that is a balanced diet. A BALANCED, balanced, DIET, diet. Now, a diet containing right quantities of nutrients is called a balanced diet. It includes all the food components, proteins, carbohydrates, fats, minerals, vitamins, as well as roughage and water. It helps us to grow well and remain healthy. Now, a diet that contains all the nutrients in specific quantity is called a balanced diet. And those nutrients are, that diet should have carbohydrates, proteins, vitamins, fats, minerals, roughage and water. That diet helps us to grow well and it also maintains our health. Means your diet should have the quantities of the nutrients should be specific, means in right quantity. Means suppose if you are taking intake of fats more, or then what happen when you are taking more fat, then you may become obese. When you will intake more carbohydrate in your nutrients, then you may have sugar. That is why doctor prescribes not to eat more fat in your diet, because it may make you grow obese. That is why your mother is telling you always to eat dal, because it includes protein. She tells you to eat chapatis and rice also, because it includes carbohydrate. Now the mother is also telling you always to eat more and more vegetables and fruits, because they are the rich source of vitamins, minerals, roughage and water. Roughage is also very essential for you to include in your diet. मतलब वो भोजन जिसमें आपके सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में हों, ऐसे भोजन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट को हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार. मतलब आपके भोजन में फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल, रफेज और वाटर भी होना चाहिए. क्योंकि अगर आपने अपने भोजन में फैट की मात्रा बढ़ा दी तो आप मोटे हो सकते हो. अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, मीन्स इफ यू हैव स्टार्टेड ईटिंग पोटैटोज, देन इट यू मे इंक्रीज योर शुगर लेवल. सो इसीलिए आपको अपने भोजन में ये सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलाने चाहिए. इसीलिए आपकी माँ आपको अक्सर बोलती है कि बेटा दाल खा लो, क्योंकि दाल जो है वो प्रोटीन का स्रोत है. मम्मी बोलती है बेटा दूध पी के जाओ, क्योंकि दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है. मम्मी कहती है बेटा फल सब्जी खाओ. क्यों बोलती है? क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे भोजन को जिसमें ये सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, इन्हें हम संतुलित आहार मीन्स बैलेंस डाइट कहते हैं. क्योंकि अगर आप अपने भोजन में इनको इंक्लूड करेंगे, इन सारे पोषक तत्वों को इंक्लूड करेंगे, तो ये पोषक तत्व आपको ग्रो करने में, आपको हेल्दी बनाने में मदद करेंगे, आपको बढ़ने में मदद करेंगे, आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे, आपको बीमारियों से बचाएंगे. Now children, let's move on to our next topic, and that is preserving food. PRESERVING, preserving food. Food that is kept for a long time gets spoiled or decayed. We cannot eat spoiled food. The process of protecting food in a way that preserves its value for a long time is known as preservation. There are several ways to preserve food. Some well-known preservatives are oil, sugar and salt. Children, if you keep your food for a long time, bacteria and germs start growing on them.
then after a long time it may start smelling, it gets decayed, it becomes spoiled. So that food is unhealthy for you. So to preserve the food in a way to protect its nutrients is called preservation. The process of protecting the food in a way to prevent its nutritional value is called preservation. To preserve the food, there are many preservatives. Some preservatives are oil, sugar and salt. There are other also, we use chemicals also. We dry the food when we have to use it later on, then we also, drying is also a method to preserve the food. Because when you use that food, you soak it into water, then you can use that dried food. And you can also use refrigerator, means you can refrigerate the food. Nowadays many packaging materials are coming, like Lay's, that is filled with nitrogen. It is preserved for long time. So to preserve the food in a way to protect its nutritional value is called preservation. अब हमको अपने भोजन के सभी पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन. उस प्रिजर्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संरक्षण, मतलब कि फूड की पोषक तत्वों की रक्षा करना. इसीलिए हमारा जब हम फूड बहुत दिनों तक रखे रहते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं. इसीलिए अपने भोजन के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं. संरक्षण करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल डालते हैं. कभी कभी हम उसे धूप में सुखा देते हैं, बाद में यूज़ करने के लिए उसको हम फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देते हैं. जैसे कि समटाइम्स योर मदर प्रिपेयर्स पिकल, then in that pickle she uses salt, oil and vinegar. Tomato sauce is also preserved. That also these companies are using preservatives. Sauce is there. Your mother preserves peas also in refrigeration. So in that she uses salt. She boils it for a minute. So these are the ways to preserve the food. तो इसलिए भोजन के पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए रखने के लिए हम उसमें जिन पदार्थों को डालते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, और उसके पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए हम भोजन के साथ जो करते हैं उसे बोलते हैं प्रिजर्वेशन. ओके, नाउ कमिंग टू आवर, नाउ लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रिजर्वेशन. नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग in a way to prevent its nutritional value is called preservation. Preservation. Now our next topic is digestion of food. The food that is eaten has various nutrients which cannot be absorbed directly by our bodies. They have to be broken down into simpler forms. Digestion is the process of breaking down of food into smaller pieces and simpler forms to release nutrients. Let us study how food is digested in our bodies.
the food which we take, it cannot be digested in the same way as we intake it. So the food that is eaten, why it cannot be digested? Because we have to release the nutrients from this food which we take. So to release the nutrients from the food, it has to be broken into small pieces, otherwise it cannot release nutrients. It has to be moistened, it has to be softened. So the process of breaking down of food particles, larger food particles into smaller food particles, is called digestion. Why it is broken into smaller food particles? To release the nutrients so that it can be absorbed by our body. इसलिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम खाने को बड़े पीसेस से छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, इसलिए तोड़ते हैं जिससे कि उसके सारे पोषक तत्व, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज और वाटर वगैरह, ये सब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे शरीर उसको सोख ले। ऐसी प्रक्रिया जिसमें इन सब न्यूट्रिएंट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स को हमारा शरीर सोख ले, इसके लिए हम फूड को बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। वो एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा भोजन जो है वो बड़े से छोटे में टूटता है और हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं पाचन। नाउ you will study in detail about this process in next class. So this much for this class, students. Now see what I have taught you today, na, that you have to study at home and you have to learn the important important topics like digestion, preservation, all these definition you have to learn it today. Okay, now this much for today's class, children. Keep safe, stay at home, keep on learning. Thank you, students.